Dear students, today we will start with part 8 of the Indus Valley Civilization, the written and spoken language. I would advise that you read along with me so that it becomes easier for you to understand what has been written. So let us begin. Part 8, Written and Spoken Language. Indus Valley Civilization flourished for nearly 2000 years before it came to an end. Now, as you can well imagine, 2000 years is a very long time. You are hardly 11 or 12 years old, so you can well imagine how long a time period 2000 years is. No one knows the reason why this civilization came to an end. The reason for our not knowing is very simple. We cannot, even today, read their written script. Script is what we call lipi. The way in which we write is known as the script. But what is so special about this language that the historians have failed to read it, even after 100 years of its discovery? The Indus script is the writing system developed by the Indus Valley Civilization, and it is the earliest form of writing known in the Indian subcontinent. Now, what is a subcontinent? Subcontinent is a large area, but it is smaller than a continent. It is not large as as large as a continent. It's a large part. So Indian subcontinent basically consists of 7 countries. One is India, which is the biggest of the countries here. Then there's Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Bhutan, which is now known as Myanmar, and the country of Maldives. All 7 of these countries together form the Indian subcontinent. Now, why are they saying that it is the first known written form? Because before this, all the information, all the knowledge of the earlier generations was conveyed through oral means. It was never written down. They did not know how to write. So everything that they wanted to convey to their children, to the next generation, was done orally. The origin of this script is poorly understood. We are yet to find out the reasons that motivated these people to start writing. So whatever the reasons that they had, that they decided that they should have a script so that their knowledge, their messages should be written down, are still not clear to us. The Harappans wrote on soft clay using pointed sticks or by scratching marks onto stone and metal. Now, why do you think this was? This was simply because paper had not yet been discovered. As we know, Indus Valley Civilization existed some 5000 years ago, and paper was discovered in China hardly 2000 years ago. So the people of Indus Valley Civilization did not know about paper. So that is why they wrote on clay and on stone and on metal. Now, the written language of the Indus Valley used more than 400 picture signs. Now, that is a lot to remember. Don't you agree? These are some of the symbols from their script. So, if you look at these symbols, these are just a part of the script. The script was very long. 400 letters, as you can understand, is a very long script. So, this is just a sample of the alphabets or the symbols that they used. The writing system in itself was very different. They wrote from right to left, much like Urdu is written and not like Hindi or English is written. But many a times the first line was written from right to left, then the second line was written left to right, and so on. Something like this. If you look at this image given below, you will see how they wrote. Read these sentences by following the arrows. Can you find out what do they say? So now you will have to read it according to the arrows, the direction the arrows are going in. A couple of lines are very easy to read, and some you will find that difficult to read. The dash that you are seeing here,
The dash that you are seeing here has to be filled in with your name. This particular dash you will write your name here. Now you will solve this and you will submit it along with your assignment. Do you think it was an easy way to write? Would you like to write like that? Now you can well imagine how difficult it is for the historians to understand their language. Now there's another problem faced by the historians. What is it? Let's find out. No one knows which language the Indus people spoke. And as we already know, no one has yet been able to read their writing. So unless and until we know which language they were speaking, it is a little difficult, because the spoken language would have given us a clue to work to in which direction we should work. Some experts think that the Indus language may have been similar to Tamil, which is spoken today by people in southern India and Sri Lanka. These seals were found with writing on in the city of Mohenjo-daro. What do you think they say? Now, if you look at these seals, you will see several symbols are made. Whatever is written on it is as good a guess for you as it is for me. So we can just guess what they are saying. No clear clue is available to tell us what exactly they are saying. Now let us watch this video to recap what we have learned so far. इंडस स्क्रिप्ट के बारे में ऑल यू नीड टू नो अबाउट इंडस स्क्रिप्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस. यहाँ पिक्चर देख सकते हैं. दीज आर द इंडस स्क्रिप्ट. आप देख पाएंगे कुछ ऐसे स्क्रिप्ट होती थी, यानी कुछ ये अल्फाबेट्स नहीं लिखते थे, ये पिक्चर्स बनाया करते थे. तो चलिए जानते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं. तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, सो द इंडस स्क्रिप्ट वॉज ऑल्सो नोन एज द हड़प्पन स्क्रिप्ट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ रिटन स्क्रिप्ट फाउंड इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पाई जाने वाली सबसे पहली रिटन स्क्रिप्ट है, इसका नाम है इंडस स्क्रिप्ट और हड़प्पन स्क्रिप्ट. लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, जो इंडस के लोग लिखते तो थे, हमें पता है उनकी स्क्रिप्ट तो थी उनके पास, लेकिन वो क्या लिखते थे वी आर नॉट एबल टू डिसाइफर्ड येट. सो दिस स्क्रिप्ट इज नॉट डिसाइफर्ड येट, यानी अब तक हम इस स्क्रिप्ट को समझ ही नहीं पाए वो क्या लिखते थे. जिस दिन हम लोग ये समझ लेंगे तो बहुत कुछ जानने को नया होगा इंडस पीपल के बारे में. क्लियर? सो दिस स्क्रिप्ट आर एक्सट्रीमली सीन इन द सील्स, pots, clay tablets, etc. artifact. Historian assume that the people are literate. भाई लिख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, अगर आप कोई चीज रीड कर पा रहे हैं तो इसका मतलब यू आर लिटरेट इनफ. तो इसीलिए हिस्टोरियन ने अज्यूम किया हुआ है कि क्योंकि हमें लिखी हुई चीजें मिली है, इनकी एक स्क्रिप्ट है खुद की इंडस के लोगों की, तो जो इंडस के लोग थे दे आर लिटरेट इनफ, यानी कि वो लिख सकते थे. जैसे हम आज लिख सकते हैं ऐसे वो भी लिख सकते थे. लेकिन दोस्तों ये जो इंडस की स्क्रिप्ट है ये अल्फाबेटिकल नहीं है, इसमें छोटा बड़ा ABCD नहीं होता है, ये पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, यानी कि इसमें पिक्चर्स होती हैं. जैसे मैंने आपको यहाँ पीछे दिखाया, कुछ इस प्रकार की पिक्चर्स इसमें आपको मिलेंगी. ये दिख रहा है आपको, ऐसी कुछ पिक्चर्स उन्होंने बनाई हैं. अब इनका मतलब क्या है अनफॉर्चुनेटली अब ये पता नहीं कर पाए. सो द इंडस स्क्रिप्ट इज अ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट वेयर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल कैरेक्टर हैज इट्स ओन मीनिंग, एंड द हड़प्पन स्क्रिप्ट्स वर यूजुअली शॉर्ट स्क्रिप्ट. ये भी ध्यान रखना, ये बहुत छोटा छोटा लिखते थे, ऐसे नहीं है पैराग्राफ भर दिया है. जैसे कि मेसोपोटामिया में बड़े लंबे लंबे पैराग्राफ लिखे हैं, तो इनकी स्क्रिप्ट शॉर्ट स्क्रिप्ट थी, बहुत कम लिखते थे ये. ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने. पिक्टोग्राफिक थी, अभी तक डिसाइफर नहीं हुई है ये. और बात करते हैं, अगर हम और बात करें इंडस स्क्रिप्ट के बारे में, तो ये दोस्तों नॉर्मली इस स्क्रिप्ट का यूज करते थे फॉर द कम्युनिकेशन एंड इन ट्रेड ऑफ द गुड्स के ट्रेड में ये मोस्टली यूज की जाती थी. और कुछ लोग कहते हैं ये प्रोटो द्रविडियन स्क्रिप्ट है, जो आज के टाइम पे साउथ इंडिया में लोग लैंग्वेज बोलते हैं उससे मैच करती है ये. कुछ लोग कहते हैं ये एक प्रोटो संस्कृत स्क्रिप्ट है, संस्कृत से मैच करती है. लेकिन ब्रिटिश स्कॉलर्स ये मानते हैं, जो कि गलत है उनका मानना, वो ये कहते हैं कि ये जो स्क्रिप्ट है ये मेसोपोटामिया से मिलती जुलती स्क्रिप्ट है. लेकिन मेसोपोटामिया की स्क्रिप्ट तो हम डिसाइफर्ड कर चुके हैं, तो कुछ बातें तो हमें यहाँ के बारे में पता चलना चाहिए. तो ये बिल्कुल गलत है. मेसोपोटामिया की स्क्रिप्ट बिल्कुल अलग थी और हड़प्पा के जो रहते थे उनकी स्क्रिप्ट बिल्कुल अलग है. सो मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट वाज डिसाइफर्ड
बट स्टिल इंडस रिमेन अनडिसाइफर्ड ड्यू टू इट्स यूनिक वे ऑफ राइटिंग। बिल्कुल यूनिक तरीके से लिखते थे, इसलिए ये अलग रही है। क्लियर है? आपको बेसिक बातें समझ में आई? कुछ और फैक्ट हम जान लेते हैं। सो दे आर रिलेटेड टू इजिप्टियन और द मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट। दे आर नॉट रिलेटेड टू, मतलब ये रिलेटेड बिल्कुल नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। और लगभग 400 हमें फोटोग्राफ्स इनके मिले हैं, पिक्चर्स मिली हैं लिखी हुई, तो इनको अभी हम ढूंढने में लगे इनका क्या मतलब है। और दोस्तों ये जो लिखा करते थे ना, ये लिखा करते थे, मैं आपको बता देता हूँ, ये लिखा करते थे राइट टू लेफ्ट, इस तरह लिखा करते थे। अभी हम कैसे लिखते हैं? आजकल हम लोग इस प्रकार लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं और ऐसे जाते हैं। क्लियर है? तो इनकी राइटिंग आप ध्यान रखिएगा, ऐसे ये लिखा करते थे। अब बात आती है आखिर हमें पता कैसे चला ये ऐसे लिखते थे। जब हम उनकी लैंग्वेज नहीं पहचान पाए तो हाउ हाउ वी हैव कम टू नो कि ये राइट टू लेफ्ट लिखते थे। इसका रीजन ये है दोस्तों, जब इन्होंने लिखना है, हमने देखा ये जब लिख रहे थे, जैसे मान लीजिए यहां से इन्होंने लिखना स्टार्ट किया ऐसे कुछ चित्र बनाते हुए, तो यहां पर घिचपिच हो गई इनके लिखने में। नॉर्मली क्या होता है, मान लो मैं यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं, तो जब मैं यहां से लिखता हूं, यानी कि मैं आजकल हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, तो जगह का मोटिवेशन हम लोग अपने शब्द यहीं पर लिखने का ट्राई करते हैं, यहीं लिखते हैं। लेकिन हड़प्पा स्क्रिप्ट में क्या होता है, हड़प्पा स्क्रिप्ट हम स्क्रिप्ट नहीं पढ़ पाए हैं, लेकिन हम लोग ने देखा है कि यहां पर आकर साइड में आकर वो शब्द उनके आपस में टकराने लगे। तो इसका मतलब ये है कि दे आर स्टार्टिंग दे हैव स्टार्टेड राइटिंग फ्रॉम दिस साइड, यानी कि फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट। क्लियर है? तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा हड़प्पा स्क्रिप्ट के बारे में। आखिर हमें कैसे पता चला वो राइट टू लेफ्ट ही लिखते थे, तो ये आप बात भी आपको समझ में आ गई होगी। बेसिक बातें हम लोगों ने जान ली है। अगर आपको अच्छा लगा, Now that you have understood about the written methods, the written script of the Indus Valley people, go ahead and attempt the quiz.